Hello everyone, welcome to my channel. Today we will study tense. Tense is an effect of time on verb. Tense क्या होता है? Time का verb पे क्या effect होता है? वो होता है It indicates the time when an action, a situation or an event takes place. तो basically ये क्या indicate करता है? Time. Tense मतलब time. There are three main types of tenses. टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? काल भी कहते हैं। तो बेसिकली देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ टेंसेस जो कि हैं वर्तमान काल दैट इज प्रेजेंट विच इज नाउ, पास्ट दैट इज बिफोर नाउ यानी भूतकाल एंड फ्यूचर दैट इज आफ्टर नाउ दैट इज भविष्य काल। So let us study present tense first. Simple present tense. Simple present tense is used for actions that happen on a regular basis. जो कि एक्शन डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे या पीरियोडिकली होते रहते हैं। एग्जाम्पल्स, द बॉय रन्स वेरी फास्ट। तो जनरली इट इज अ रेगुलर practice that the boy runs very fast. My Mr. Roy drives his car to office every day. So every day he is driving his car. So we will say Mr. Roy drives his car to office every day. So this is simple present tense. Next is present continuous tense. The present continuous here means जो कि हो रहा है, which is still going on. The present continuous tense is used for an action that is still going on. Example, I am reading Chetan Bhagat's new book. तो चेतन भगत की मैं अगर न्यू बुक पढ़ रही हूँ तो व्हाट आई विल से? आई एम रीडिंग चेतन भगत's न्यू बुक. द स्पीच इज बीइंग डिलीवर्ड इन द हॉल. तो अगर स्पीच अभी चल रही है तो क्या बोला जाएगा? स्पीच इज बीइंग डिलीवर्ड. So this is present continuous tense. Next is present perfect tense. Present perfect tense is used for an action that is completed just now. जो कि अभी खत्म हुआ है, which has not become past till now, but अभी finish हुआ है. जैसे कि example, I have just finished my homework. So ये कोई past event नहीं बन गया है, लेकिन अभी अभी ये काम मेरा finish हो गया है, तो इसीलिए हम इसको present perfect tense कहते हैं. They have paid the price of the purchased article. So this is again present perfect tense. Next is past tense. Past tense में क्या होता है? Simple past tense. Simple past tense basically ये भूतकाल होता है जो कि पहले हो चुका है. तो simple past tense is used for an action or event that has already happened at a certain or uncertain point of time. जो कि किसी निश्चित या फिर अनिश्चित काल पे हो चुका है, उसके लिए हम simple past tense यूज करते हैं. It is usually accompanied by words such as yesterday. इसमें वर्ड्स होते हैं yesterday, एक हफ्ता पहले, a week ago, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर एक्सेट्रा, जो कि टाइम स्पेसिफिक हैं. तो जनरली इसमें जो है ये वर्ड्स होते हैं कि कल हुआ था, एक हफ्ता पहले हुआ था, एक महीना पहले हुआ था, या 2 महीना पहले हुआ था, या फिर लास्ट ईयर हुआ था. तो एग्जाम्पल्स, आई कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट ऑन टाइम लास्ट वीक. तो इसमें बेसिकली ये कहा गया है कि मैंने अपना जो प्रोजेक्ट है वो लास्ट वीक टाइम पे खत्म कर लिया था. Yesterday we went to see the zoo. तो अगर yesterday आ गया है, it means already it is past, so we will use past tense here. Next is past continuous tense. Past continuous tense is used for an action that went on for some time in the past. So present continuous तो वो था जिसमें action हो रहा है, लेकिन past continuous क्या होगा? जिसमें action जो है हुआ था for some time in the past. तो एग्जाम्पल, दे वर वेटिंग फॉर यू ऑल आफ्टरनून. कल पूरी दोपहर वो आपका इंतजार करते रहे. सो हियर इट इज पास्ट कंटिन्यूअस, नॉट प्रेजेंट कंटिन्यूअस. द बॉयज वर प्लेइंग बैडमिंटन व्हाइल द गर्ल्स वर डांसिंग. सो अगेन हियर it is past continuous tense. Next is past perfect tense. Past perfect tense is used for an action or event that occurred before a certain point of time in the past. जो कि टाइम किसी पॉइंट ऑफ टाइम पास्ट में अकर हुआ था. जैसे कि वी हैड फिनिश्ड आवर वर्क बिफोर द टीचर अराइव. तो इसमें बेसिकली दो एक्शंस होते हैं. एक तो होता है कि द टीचर अराइव्ड, दैट इज ऑल्सो पास्ट, लेकिन उससे पहले क्या था? हमने अपना काम फिनिश कर लिया था. तो उसमें जो फर्स्ट इवेंट है कि हमने अपना काम पहले खत्म किया था, तो दैट विल बी पास्ट परफेक्ट. एंड
Second will be simple past. John had gone out when I arrived in the office. यानी जॉन जो है पहले चला गया था और जब मैं ऑफिस आई. Similarly, I had saved the document before the computer crashed. कंप्यूटर के क्रैश होने से पहले ही मैंने अपना डॉक्यूमेंट सेव कर लिया था. तो I had saved the document. Next is past perfect continuous tense. The past perfect continuous tense is used for an action that began in the past and continued up to a point. तो past में शुरू हुआ और past में ही किसी टाइम तक continue किया. Example, it had been raining hard for several hours. तो past की बात हो रही कि उस दिन जो है बहुत बारिश हो रही थी बहुत घंटों से. Had you been waiting long before the taxi arrived? तो क्या तुम बहुत देर से टैक्सी की वेट कर रहे थे? तो this is again past perfect continuous. Next is future tense, that is bhavishya kal. First is simple future. Simple future tense is used to denote an action that will take place in the future. जो कि action भविष्य में होगा. Usually the helping verbs shall or will are used in this tense. तो shall और will के help से हम जो है future में sentence बढ़ाते हैं. जैसे कि I do not have time today. I will meet you tomorrow. कि आज तो मेरे पास समय नहीं है लेकिन मैं कल तुम्हें मिलूंगा. I will meet you. I shall study for my exam tonight. कि आज मैं जो है एग्जाम की तैयारी करूंगा. I shall. Future continuous tense. It is used to express a continued or an ongoing action in future. क्योंकि future में action होता रहेगा इसलिए इसको continuous और future continuous कहा गया है. जैसे कि I will be waiting for you tomorrow. कल मैं आपका इंतजार करूंगा. It conveys ongoing nature of an action, that is waiting. What is the ongoing nature of action? Action verb is wait here. So ongoing nature is waiting the future. So auxiliary verb will be is used in the sentence. जैसे कि first form of word plus ing is used as main verb. The formation of future continuous क्या होगा? Subject plus will be plus first form of word plus ing plus object. जैसे कि I will be waiting for you tomorrow में subject is I, will be waiting यानी first form of verb is wait plus ing waiting and object is for you tomorrow. So that way the formation of future continuous tense is happening. Similarly, you will be feeling well tomorrow. So यहाँ पे action verb is feel तो इसलिए इसके साथ ing और subject plus will be plus action verb plus ing and then the object. Next is future perfect tense. Future perfect tense is used for an action that will be completed by a certain time in future. फ्यूचर में जो किसी समय तक कोई एक्शन खत्म हो जाएगा उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस से डिनोट करते हैं. एग्जांपल इज आई शैल हैव कंप्लीटेड रिवीजन ऑफ ऑल चैप्टर्स बाय नेक्स्ट वीक. सो दिस इज अगेन फ्यूचर परफेक्ट टेंस. आई विल हैव लेफ्ट फॉर होम बाय द टाइम ही वेक्स अप. मैं घर से निकल चुका हूँगा जब तक कि वो बाहर आएगा. सो हियर वी हैव यूज्ड फ्यूचर परफेक्ट टेंस. अभी हम प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस देख लेते हैं. Choose the correct option to fill in the blank with the correct form of verb. The plane dash at 6:30. So the plane arrives at 6:30. अगर इसमें arrived लिखना होता है तो इसमें yesterday या ऐसे कुछ. तो जनरली जो plane है वो it comes at 6:30. So it is present, simple present tense. Stars dash brightly in the night sky. तो स्टार जो है शाइन करते हैं हमेशा रोज ही करते हैं. तो stars shine brightly in the night sky. क्योंकि stars are plural, that is why shine, not shines. Next is Jane dash 8 hours a day. तो Jane जो है work नहीं आएगा क्योंकि Jane is a singular person. So works 8 hours a day. तो Jane जो है daily 8 hours काम करता है. My sister dash very fast. So my sister talks very fast. My brother and I dash Japanese. So my brother and I speak Japanese because my brother and I मिलके plural बन जाता है. So this is a subject which is plural. That is my brother and I. There are two people in this. That is why it will be speak Japanese. Next is choose the correct option to fill in the blank with the correct form of verb or tense.
Mr. Dan dashed diligently in his factory for 5 years. So Mr. Dan for 5 years it indicates कि already action हो चुका है. So Mr. Dan has worked. So worked basically. He dashed from London yesterday. Again यहाँ पे अगर हम देखेंगे yesterday word आ गया है तो he returned. That is a simple past tense. Similarly, he dashed ill for long time. So he was ill for a long time. The teacher dashed us a frightening story. The teacher told us. कि टीचर ने हमें एक डरावनी कहानी सुनाई. Past tense. I dashed my grandparents last week. I visited. Last week आ गया ना तो इसलिए visited. I visited my grandparents last week. Next is choose the correct option to fill in the blank with the correct form of verb or future tense. तो यहाँ पे स्पेसिफिक किया है क्वेश्चन में फ्यूचर टेंस. He dash you tonight after work. He will call you tonight after work. The children dash the candy. The children will like the candy. इसमें कुछ भी आ सकता है बट सिंस इट इज स्पेसिफाइड कि फ्यूचर में भरना है तो हमें फ्यूचर में ही टेंस को फिल करना है. क्लास डैश एट 10:30 AM. क्लास विल begin at 10:30 AM. We are dash a play at the city center. We are here it is are. So what it will be? We are going to watch. We are going to watch a play at the city center. Next is I dash you move your things tomorrow. So I will help you move your things tomorrow. So this is about future tense. Next is choose the correct option to fill in the blank with the correct form of verb continuous tense indicated in the present bracket. तो इसमें जो है टेंस जो है हर क्वेश्चन में अलग अलग इंडिकेट किया है बट वी हैव टू चूज द कंटिन्यूअस टेंस. हरी अप. वी आर डैश फॉर यू. वी आर वेटिंग फॉर यू. कंटिन्यूअस जो कि हम ऑलरेडी आपका वेट कर रहे हैं. आई डैश ऑल डे येस्टरडे. आई इसमें क्या आएगा बेसिकली आई वॉज पेंटिंग. पास्ट कंटिन्यूअस डालना है ना तो आई वॉज पेंटिंग ऑल डे येस्टरडे. ही इज डैश फॉर ऑस्ट्रेलिया. सो ही इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा ही इज लीविंग फॉर ऑस्ट्रेलिया. दे डैश द होल टाइम दे वर टुगेदर. दे यहाँ पे क्या करना है पास्ट कंटिन्यूअस तो दे वर क्वारलिंग द होल टाइम दे वर टुगेदर. Next is he is always dash in class. So इसमें present continuous. He is always sleeping in class. It happened while I dash in London last year. It happened while I यहाँ पे past tense use करना है and continuous. So I was living in London last year. The universe dash and has been since its beginning. The universe is expanding, isn't it? The universe is यहाँ पे हमें क्या यूज करना है present continuous. So the universe is and has been expanding since its beginning. The phone rang while I dashed dinner. So past tense. So I was having dinner. I dash letters to my cousin. Present continuous. I am writing letters to my cousins. The doctor dashed the child. So past continuous. The doctor was examining the child. So this way it is continuous exercise. Choose the correct option to fill in the blank with the correct form of verb. By the time I arrived at the bus stop, the bus. अब इसमें क्या है past perfect. So bus had left. तो बस ऑलरेडी जा चुकी थी तो पहले एक्शन कौन सा हुआ बस के जाने का तो इसलिए यहाँ पे past perfect आएगा. By this time next year, Nancy dashed to a new apartment. So future tense. So Nancy will move to a new apartment. सॉरी यहाँ पे विल हैव मूव्ड आएगा क्योंकि अब तब तक मूव कर चुकी होगी नैन्सी तो इसलिए यहाँ पे विल हैव मूव्ड. थर्ड इज द ऑफिस डैश टू अ न्यू लोकेशन.
So the office just moved to a new location. So present, it is present. So that is why we are putting it. I dashed to Europe before my vacation to Spain. So before my vacation, I had gone to Europe. So here it will be had gone. By the time we reach Mumbai, we dash for 10 hours. So we will have driven for 10 hours. Future tense use करना है यहाँ पे. So this is our tense exercise. So guys, please like and subscribe to my channel. And when you're done, please comment done in the comment box. Thank you. Have a great day. Bye bye.